India's biggest airline is facing its biggest ever breakdown. For 7 straight days now, IndiGo has been struggling to keep its operations running, and today the crisis has hit a new point. Across the country, more than 350 IndiGo flights were cancelled on Monday alone. This comes after a week of disruption that passengers say they have never seen before. At Delhi airport, the numbers tell the story. 134 flights were cancelled, that includes 75 departures and 59 arrivals. Bengaluru airport was not far behind with 127 cancellations. Chennai saw 71 cancellations while Ahmedabad had 20 and Vizag reported 7. Even Mumbai and Kolkata faced major disruptions. By 9:30 am, the total cancellations stood at 360 flights for the day. This crisis is not new. On Sunday, IndiGo cancelled over 650 flights. 2 days before that, the number crossed 1,000 cancellations. Patience among passengers is running thin. मैं मुंबई से त्रिपुरा जा रहा हूँ। मेरा वाइफ कैंसर का पेशेंट है, उसको लेके हर 6 महीने का बताता हूँ। लेकिन इंडिगो का जो प्लेन का टिकट जो काटा है, ये कोनो मैसेज वगैरह कुछ नहीं दिया। आने के बाद पता चला जो टिकट कैंसिल हुआ। ये भी इंडिगो का जो स्टाफ है उसको बताया था मैंने, मेरा टिकट क्या है। उन्होंने बोला जो गूगल में स्कैनर सर्च कर लो। गूगल का जो स्कैनर है अपलोड करके जो सर्च किया तो अब देखा है जो कैंसिल हुआ है। तो ये लोग बोलता नहीं है, पता नहीं है जो कब जाना है, कब कुछ नहीं बताया था। मैंने पूछा था, अभी तो यह भी दिक्कत हो रहा है ना, मैं तो बैठ रहा हूँ, कोई अच्छा सा वो लोग तो बताता ही नहीं टिकट कब मिल सकता है। और ये रात को 11:30 एक प्लेन है इंडिगो का, मैंने पूछा था उसको जो वो टिकट काटूं, कोई ये काट सकता है लेकिन कैंसिल भी हो सकता है, तो क्या गारंटी नहीं है इंडिगो का कोई गारंटी नहीं है। मुंबई तो आया था 1 दिसंबर को आया था, इलाज के लिए आया था। मेरा वाइफ का कैंसर पेशेंट है, उसको फॉलो अप है और मोमोग्राफी करके जाना। नहीं गेस्ट हाउस में रहता हूँ, 2000 रुपया किराए पे, खाना दाना सब नीचे वगैरह। तो मुझे पता नहीं क्या करूँ सर, आप कुछ सजेशन दीजिए क्या करूँ। कोई मदद कोई तो है ही नहीं मदद करने के लिए। जो इंडिगो का जो स्टाफ है वो लोग तो कुछ नहीं, ये तो छोड़ दिया बीच रास्ते पे। रिफंड उसको बोला था जो रिफंड मिलेगा क्या, को बोला हाँ, जो जिस ट्रिप से मैंने टिकट खरीदा उसमें जाएगा, ये बोला रिफंड होगा। तो कब होगा रिफंड, ये भी सटीक बात नहीं बताया। अभी इंडिगो के अलावा अभी 28,000 रुपया करके जो इंडियन एयरलाइंस है वो देख रहा हूँ। कुछ नहीं, मैंने 1 महीने पहले किया था, मैंने इसमें इसका यानी फ्लाइट की मैंने बुकिंग किया था। बट अभी कल रात में मैसेज आया कि भाई अभी तुम्हारा फ्लाइट जो है जो नागपुर जाने वाले तो वो कैंसिल हो गया है। तो इससे हम खेत जाने वाले से इंडिगो की तरफ से मैसेज आया था और फिर बाद में मैंने रिजर्वेशन कर लिया था। लेकिन मैं वो तभी इससे मैं नाराज़ हूँ कि ऐसा नहीं होना था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कि जो मैं फ्लाइट से मैं बम्बई से नागपुर में जाने वाला था। अभी मैंने बुकिंग कर दिया रात में 12 बजे, अभी ट्रेन का बुकिंग कर दिया, मेरा रिजर्वेशन हो गया है अभी। हाँ, तो अभी मैं 1:30 बजे मेरा ट्रेन है अभी कल्याण से नागपुर, तो मैं नागपुर चला जाऊंगा मैं। हाँ, दिक्कत तो बहुत सारे लोगों की हो रही है ये दिक्कत। हाँ, बहुत सारे लोगों की दिक्कतें हो रही है ये, लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अभी। हाँ, रिफंड तो अभी वो बोल रहे कि 3-4-5 दिन में अभी रिफंड हो जाएगा बोले। लोग तो परेशानी है उसमें, लोग नाराज है और इंडिगो से नहीं क्या, और ये अभी नहीं है और यहाँ भी नहीं है सब। अभी मैं फेसबुक इस पर इंस्टाग्राम में भी देखा हूँ कि बिहार बेंगलोर कर नारेबाजी चल रही है, सब इंडिगो के नाम से मुर्दाबाद करके इंडिगो के नाम से कर रहे। मैं जयपुर से गुवाहाटी आई थी, फिर मेरा रिटर्न टिकट था 5 तारीख का इंडिगो का, वापस जयपुर जाने का, शाम को 5:55 का, लेकिन कैंसिल हो गया। या हंगामा हो रहा था तो हमको कुछ लिख के भी नहीं दिया, क्योंकि बहुत मार पिटाई हो गया शुरू यहाँ पे, इसलिए इन्होंने खिड़की बंद कर दिया। हम घर चले गए वापस, जहाँ जिनके आए हुए थे अपने मेरे मामा जी की डेथ पे। फिर मैं वापस जो है 3 दिन लगातार ट्राई करी, कोई इंडिगो का न तो शिफ्ट किया टिकट, न कोई रिस्पांस दिया, न जो फोन नंबर दिया था वो उठाया भी नहीं किसी ने। फिर उसके बाद जो है हमने एयर इंडिया का टिकट लिया आज का, जो कि 2 दिन पहले बुक किया, और वो हमको 25,800 का मिला है जयपुर जाने का। अब हम इंडिगो ऑफिस ट्राई कर रहे हैं, अभी तक पैसा वापस आया नहीं है, और फिर हम जो है एयर इंडिया से जयपुर जाएंगे। अभी 10:20 पे हमारा फ्लाइट है। Officials say more than R610 crore has already been refunded to passengers. But for most travelers, the money is not the issue. The problem is the chaos, long queues, missed events, stress, and confusion at airports. So what triggered this unprecedented meltdown? According to IndiGo, the crisis began with a shortage of cockpit crew.
This happened after the government fully implemented new rules on pilot rest, known as Flight Duty Time Limitations, or FDTL norms. The intention behind the rule was to ensure safety, but its sudden impact paralyzed the airline's roster system. With massive cancellations and airports slipping into disorder, the government stepped in. The rule has been temporarily paused. The airline now hopes to stabilize operations by December 10th, but the pressure on IndiGo's top leadership is clear. Dear IndiGo colleagues, it's Sunday afternoon, December 7th. I'm standing here at IndiGo's Operations Control Center in Gurgaon. As you can see the bus going on in the background, my colleagues here are working relentlessly to further stabilize and normalize the IndiGo operation. For me, they symbolize the unwavering spirit, professionalism and incredible commitment of all at IndiGo. Once again, my sincerest appreciation for the great work each and every one of you is doing. In my earlier messages, I conveyed we would be rebooting the system Friday, take a significant number of cancellations and start afresh on Saturday. That has worked well by operating some 1,500 flights yesterday as compared to only 700-ish on Friday. Also, we have been able to execute the cancellations at an earlier stage, so customers don't show up at the airport in case their flights are being cancelled. It gives us all the confidence that step by step we're getting back. Today we realize further improvements of the system in order to reach around 1,650 flights. A better OTP, less cancellations, and importantly, customers are being notified in advance. Today's OTP is projected around 75%, significantly up from 30% yesterday. The network coverage has been restored with 137 stations operated. Also for our customers, all processes around refunds, luggage, rebooking are in full swing and we're actually reducing the backlog as we go forward. The last days have been very difficult for the people in Operation Control Center, for all the teams supporting them, for our pilots and cabin crew with delayed flights, disrupted rosters and so on. Kindly allow me to make a special shout out to our AOCS staff who had to face very tough situation at the airports, especially on December 5th when customers were stranded. I am grateful to everyone. Also, I would like to highlight that we are receiving and do much appreciate the support from aviation ecosystem in India, the government, DGCA, CISF, BCAS and airports. All of us, and I personally, feel the pain of our customers, are deeply apologetic and addressing their needs, which is and will remain our topmost priority. We are grateful for their support and appreciation as we also see and receive heartwarming messages from customers on the hard work of our colleagues are doing in many places, on board and on the ground. I want to convey that too. Once again, thank you for all your efforts and hard work. I'm confident that we will emerge stronger from here. Thank you. The DGCA has issued show cause notices to IndiGo CEO Peter Elbers and Senior Manager Isidro Porqueras. Both have been given time until 6 p.m. Monday to respond. The government says the airline had enough time, almost a year, to prepare for the new pilot rest rules. The Civil Aviation Ministry has also taken key steps. Airfares have been capped to protect passengers. IndiGo has been ordered to speed up refunds. A high-level inquiry is now underway to find out what exactly went wrong and who should be held accountable. Meanwhile, the airline says it is studying the root cause of the mess. It claims multiple factors came together at the same time, triggering a collapse that snowballed into a nationwide breakdown. As of Saturday, IndiGo says it has returned Rs610 crore to passengers and delivered 3,000 pieces of stranded baggage. But for India's aviation sector, the real question remains: how did the country's largest airline, with more than 60% market share, fall into such chaos so quickly? And can it recover before trust is lost? For now, passengers continue to wait. And India continues to watch as the IndiGo crisis enters a tense and uncertain 7th day.